लिखो रिफ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, रिफ्रैक्शन। यहीं से कोर्स में आगे है, यहीं से लिखो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन चेंजेस द मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। लिखो रिफ्रैक्शन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच bending of light, write down refraction, it is the property of light, it is the property of light by virtue of which bending of light takes place, bending of light takes place when changes its medium, bending of light takes place when changes its medium, bending of light takes place when changes its medium. Understood this? रिफ्रैक्शन के वजह से बेंडिंग हो रहा है। अरे एक स्टिक को अगर हाफ इमर्स करोगे, स्टिक को, स्टिक बेंड जैसे दिखाई देगा, दैट इज ड्यू टू व्हाट? रिफ्रैक्शन, दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हुआ? तो अभी लाइट क्या हो रहा है? देखो लाइट ऐसे सीधा जाना चाहिए था इसको, अरे सीधा ऐसे जाना चाहिए था, बट ये अभी ऐसे बेंड होके जाएगा, यहीं से बेंड होगा। दिस बेंडिंग phenomenon is known as refraction. Bending of light is known as refraction. ऐसे बेंड हो गया यहीं पे। हुआ? डायग्राम ड्रॉ करो, एंड दिस इज व्हाट नॉर्मल, and this is what here normal, here this is the normal, this is the normal, ON is the normal, write down ON is the normal here, this is the angle of incidence, this is the angle of incidence, always angle is measured with respect to normal, and this is what the angle of refraction are, and this small angle is known as, जो छोटा एंगल देख रहे हो, this small angle is known as deviation d, d और delta deviation, write down ये incident ray, this is what incident ray, and this is what refracted ray, you know, this is the incident ray and this is what refracted ray, and d or delta is the deviation, I is the angle of incidence, r is the angle of refraction, write down this, लिखो this is the first medium and this is what the second medium, clear? तो angle I is the angle of incidence, angle of incidence, angle R is the angle of refraction, angle of refraction, and here d or delta angle is known as angle of deviation, angle of deviation. What do you mean by angle of deviation? पहले डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया तो यस बोलो। इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहीं से अच्छी तरह समझो। Sir, explain again. Again, okay. This is what incident ray. Incident ray must travel in a straight line, but it is bending like this. So this is the refracted ray. Incident ray, this is what refracted ray. This is the angle of incidence and this is the angle of refraction. And this is known as deviation, d or delta. D or delta is known as angle of deviation, dVia di1 deviation, d or delta. Clear? Yes, sir. Now completed. Hello. सर ये रेयर टू डेंसर होगा ना? हाँ, रेयर टू डेंसर जा रहा है, उसको डिफाइन करेंगे विच इज रेयर और विच इज डेंसर, उसका भी एक डेफिनेशन है। जब रेयर लोअर क्लास में पढ़े थे, जब रेयर टू डेंसर जा रहे हो तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल,
when it is moving denser to rarer, it will bend away from the normal. यही पढ़े थे. away from them. Yes, Yes. sir. लिख दिए, डायग्राम ड्रॉ कर दिए. समीक्षा, completed diagram. ज्योतिर्मयी. Yes, sir. Okay. Now write down. लिखो. What is deviation? पहले लिखेंगे. Deviation क्या है? Write down. Deviation. Deviation क्या है? This is the angle. Deviation d or delta. This is the angle turned by the incident ray. This is the angle turned by the incident ray. TURNED turn. This is the angle turned by the incident ray to become refracted ray. To become refracted ray. This is the angle turned by the incident ray to become refracted ray. Clear? मतलब ये डेविएशन है. सभी रे ऑप्टिक्स में तुम्हारा डेविएशन है. प्लेन मिरर में भी डेविएशन है, बट बताया नहीं क्योंकि बताऊंगा बाद में. 180 - 2IA. अरे डेविएशन मतलब कितना एंगल घूमता है. अरे ये जो इंसिडेंट रे कितना एंगल घूम गया हुआ, समझ में? दैट इज द डेविएशन. तो ये सीधा जाना चाहिए था बट ऐसे चला गया. दिस इज व्हाट द डेविएशन. दिस इज द एंगल टर्न बाय द इंसिडेंट रे टू बिकम रिफ्रैक्टेड रे. समझ में? तो डेल्टा डी और ये कैसे निकालेंगे बोलो? अरे पूरा एंगल कितना आएगा? आई आएगा. अरे पूरा एंगल कितना आएगा बोलो? Sir, I minus R. यस, आई माइनस आर. ये पूरा एंगल है आई. अरे पूरा एंगल आई आएगा ना. तो ये छोटा सा एंगल कितना है? आई माइनस आर. देयरफॉर डेविएशन डी और डेल्टा इज इक्वल आई माइनस आर. आई माइनस आर इज द डेविएशन इन रिफ्रैक्शन ऑलवेज. सभी को समझ में आ रहा है? अरे इन डेविएशन रिफ्रैक्शन डेविएशन कितना है? आई माइनस आर है. दैट इज द डेविएशन. क्यों? बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आना चाहिए. ये आई है, ये आर है, तो डी विल बी व्हाट? आई माइनस आर. ये जो सबट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज व्हाट आई माइनस आर है. क्लियर हो रहा है? हेलो, क्लियर हुआ ना? तो डेविएशन इज व्हाट? आई माइनस आर इन रिफ्रैक्शन. हुआ? नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट डाउन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये तो इजी लॉ है, लिखो. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. फर्स्ट लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे कमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. राइट डाउन. द इंसिडेंट रे कमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie on the same plane. Lie on the same plane at the point of incidence. Lie on the same plane at the point of incidence. The incident ray, refracted ray and the normal lie on the same plane at the point of incidence. सेकेंड लॉ क्या है? देखो सेकेंड लॉ. व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ कौन बोलेगा? अरे सेकेंड लॉ क्या है? Sir, ratio of angle of incidence to the sine of angle of refraction bears a constant sine of ratio angle of given color incidence of light. to the sine of angle of refraction is always constant and that is equal to refractive index of the medium. That is Snell's law. बहुत important law है ये, लिखो. सेकेंड लॉ राइट डाउन. The ratio of sine of angle of incidence, SINE sine, SINE sine. अरे cosine sine है ना. Write down the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant. Is always constant and is equal to refractive index of the medium. And is equal to refractive index of the medium. Refractive index of the medium.
This is known as Snell's law. This is known as Snell's law. This is known as Snell's law. Means sin I divided by sin R is equal to mu, refractive index of the medium. This is known as Snell's law. sin I by sin R is equal mu. ये mu को कैसे लिखेंगे देखो, mu is what, लाइट यहाँ पे कैसे जा रहा है, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में जा रहा है, इसलिए mu, ये देखो राइटिंग स्टाइल देखो, नहीं तो फंसोगे एग्जाम में। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आवाज आया? हेलो हेलो, Yes, yes, sir. ओके देखो, तो अभी राइटिंग वे कैसे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, देयरफॉर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखा जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में फंसाता है जानबूझ कर ये वो। तो म्यू 1 2 मतलब 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2, कीप इन माइंड 1 to 2 में लाइट पास कर रहा है, मतलब पढ़ोगे क्या है 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और म्यू 1 2 और म्यू 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, तीनों एक ही बात है। ये 1 इधर भी लिख सकते हो, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, वह मतलब लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1 to 2। ये सभी जो मैंने लिखा, ये सभी जो मैंने लिखा, दिस इज व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे 80% बच्चे इसी में ही गलत कर लेते हैं, उल्टा आता है इसलिए आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम लिखो, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, refractive index of second medium with respect to first medium, mu 1 2, mu 1 2 or mu 2 1, sin I by sin R is equal mu. This is known as Snell's law. ये बहुत ही important law है, very very important one. This is what Snell's law. 2 with respect to 1 means light is traveling from 1 to 2. अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन में भी रिप्रेजेंट किया था, एन और म्यू, तुम्हारा मर्जी जो भी लिखो। टेक्स्ट बुक में एन टर्म्स में दिया गया है एंड रेफरेंस बुक में म्यू टर्म्स में दिया गया है। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल म्यू, लिख दिया ना? अरे समझ में आ रहा है अर्पिता? Yes. ज्योतिर्मयी बोलो बोलो स्पंदन। Yes, sir. हो गया ना? ओके, दिस इज व्हाट स्नेल्स लॉ। नाउ लेट्स राइट व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लिखो व्हाट इज दैट, राइट डाउन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लोअर क्लास में पढ़े थे इसका डेफिनेशन, speed of light in vacuum to the speed of light in medium, लिखो it is defined as, write down, it is defined as the speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in medium, speed of light in vacuum by speed of light in medium. C is what? The speed of light in vacuum, and V is the speed of light in medium. लिखो where C is the speed of light in vacuum and V is the speed of light in medium. Mu is equal C by V. इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकता है, ये एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, as B is equal lambda by T और न्यू लैम्डा है, हम लोग पढ़े थे। B is the speed of light, lambda is the wavelength of light and T is the time period, 11th क्लास में पढ़े थे। अरे B is the speed of light, lambda is the wavelength and T is the time period, 1 by T is the new is the frequency here,
nearer, and this is lambda. Means b is directly proportional to lambda and also directly proportional to frequency. अरे पहले lambda terms में लिखेंगे. हेलो, तो कैसे लिखोगे? This is what अगर स्पीड देखो लिखो, therefore refractive index of the medium is mu 1 to 2 जा रहा है, वह 1 2 with respect to 1 means speed of light in first medium to the speed of light in second medium, and that is equal to, लिखो, हो गया? जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वहां पे वेवलेंथ क्या है, ज्यादा होगा. जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम है वहां पे वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो. Yes, sir. अरे स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ में क्या होगा, जनरल कॉन्सेप्ट इसका देखो. जनरल कॉन्सेप्ट है, यहीं पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है इसलिए वेवलेंथ ज्यादा है. वेवलेंथ इज लैम्डा 1 ज्यादा है, हुआ. एंड यहीं पे स्पीड ऑफ लाइट कम है इसलिए वेवलेंथ कम हो जाएगा. दैट इज व्हाट लैम्डा 2. एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. हियर लैम्डा 2 इज लेस देन व्हाट, लैम्डा 1. अंडरस्टैंड दिस. लिखो, इसको ऐसे लिखो तो बेटर समझ में आएगा. हुआ? सर बोलो बोलो. सर डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मतलब कम होगा या फिर वैसे ही? डेंसर में कम होगा. अच्छा, ये एक्सप्रेशन मत लिखो, कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसको मत लिखो. तो यहीं पे एक जनरल कॉन्सेप्ट में लिखो, राइट डाउन. जनरल कॉन्सेप्ट में लिखो तो समझ में आ जाएगा. राइट डाउन. लार्ज इज द स्पीड ऑफ लाइट, less is the large is the refractive index. Sorry, large is the speed of light, large is the wavelength. Write down. Large is the speed of light, large is the wavelength. If V1 is the V1 is the speed of light in rarer medium and V2 is the speed of light in denser medium. V1 is the speed of light in rarer medium and V2 is the speed of light in denser medium. Denser medium, then what will happen? This is what lambda 1 by lambda 2 you are going to get. Lambda 1 by lambda 2 you are going to get. And lambda 1 हमेशा larger आएगा Boy, क्योंकि V1 larger है. lambda 2 कम आएगा क्योंकि V2 कम है. हुआ? lambda 1 by lambda 2. Understand this? And frequency of, write down, frequency is the only characteristic of light that never changes. Write down. Frequency is the only, write down, frequency is the only characteristics of light that never changes. Frequency is the only characteristics of light that never changes. That never changes. Clear? मतलब ये दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होगा. अरे फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी जितना है, ये फ्रीक्वेंसी जितना है ν1, ये भी फ्रीक्वेंसी इतना ही होगा ν2. ν1 इज ऑलवेज इक्वल टू ν2. फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है. समझ में आया? फ्रीक्वेंसी इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट दैट नेवर चेंजेस. क्लियर हुआ? अरे समझ में आया सभी को? yes, हेलो. And the most important is what? देखो, mu is inversely proportional to V. Mu is inversely proportional to V. समझ में आया? voice break. हेलो, हेलो,
Now it's clear. Mu is inversely proportional to v. Large is the velocity, less is the refractive index. समझ में है? Another important note में लिखो, जो another important note है. Right down. अरे clear सुनाई दिया? स्पंदन. Yes, sir. सर Yes, सर sir. भी तो आपने बोला था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ना. क्या? v2 is the speed of light in medium. Yes. Mu is the refractive index of the medium is inversely proportional to the speed of light in the medium. Mu is the refractive index of the medium, that is inversely proportional to the speed of light in medium. Clear? That means ये बहुत important है, powerful point for the problem. Mu 2 1 2 means 2 with respect to 1. Respective means division. That is mu 2 by mu 1 is equal to क्या आएगा? v1 by v2. बहुत ही important है ये. इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है, करेंगे इसको. very important one. Mu 1 2, try to understand this. Mu 1 to 2 means 2 with respect to 1, that is mu 2 with respect to 1, and mu is inversely proportional to velocity. So mu 2 by mu 1 is equal v1 by v2, or that is equal to क्या है बोलो? That is equal to lambda 1 by lambda 2. lambda 1 by lambda 2. ये एक्सप्रेशन बहुत ही पावरफुल एक्सप्रेशन है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को you can write in terms of velocity. You can write in two refractive indices of the medium, and also you can find out by the wavelength of light. वाह, frequency तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि frequency is the only characteristic of light that never changes. अरे समझ में आया? वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हेलो. सर ये mu2 by mu1 क्यों हुआ? हाँ, फिर से इसको मैं समझाइए। पढ़ रहा हूँ. देखो, ये mu 1 2 means 2 with respect to 1. Respect means division ना. 2 with respect to 1. Respect मतलब डिवीजन है ना. समझ में Yes, समीक्षा? तो mu 2 by mu 1 is equal v1 by v2, lambda 1 by lambda 2. Is that clear? Yes, sir. Very important this one. Clear? Now write down. What is optically rarer medium? लिखो. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रेयर डेंसर मीडियम को डिफाइन करेंगे. लिखो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर. ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है? द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर. स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर लिखा. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? Optically denser medium, the medium in which the speed of light is slower. वाह, optically denser medium क्या है? The medium in which the speed of light is slower. Rarer medium में speed ज्यादा होगा, इसलिए refractive index क्या है? कम है. Optically rarer medium क्या है? The medium in which speed of light is larger. Optically denser क्या है? The medium in which the speed of light is what? Slower. इसलिए denser medium में